Thank you. Thank you very much for joining. We would like to welcome you all on Independent Research Ethics Society's चौथी 1938th फोर्थ milestone. भैया 2000 Thank you very much for joining. Mute, please mute, please mute, please mute. So, today is day. Yes, Saturday, Small Business Day is on every last Saturday of November, and today is the day, November 30. So we are celebrating Small Business Day, in which our Prime Minister's message is very clear: vocal for local. That is the prime theme कि आप ई मॉल और बड़े मॉल के चक्कर में आप छोटे बिजनेस को मत भूल जाइए। मेरा ये मानना है। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी को उनके स्वागत भाषण के लिए उन्हें आमंत्रित कर। आदरणीय अग्निहोत्री जी। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी। आज हमारा महीने का इस नवंबर महीने का अंतिम दिन, और अंतिम दिन में लास्ट डे पर फोर लग रहा है, और ये हमारी आज की चौथी वेबिनार है, जिसमें कि हम बहुत छोटी वेबिनार लेकिन छोटी बिजनेस के लिए है कि हम लघु उद्योग धंधों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल पर्सन्स को कैसे हम मुख्य धारा में लाएं और उनके व्यवसाय को ऑनर करें, रेस्पेक्ट करें, स्मॉल इस जॉब करने वालों को भी रखिए। उसके क्रम में हम स्वागत करते हैं आज के अतिथि वक्ताओं का इस वाली वेबिनार के लिए। आदरणीय डॉक्टर शेखर कुमार बसु जी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मैडम सुब्रण्या मुखर्जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर पंच शर्मा जी भी अपना कुछ स्मॉल टिप्स या स्मॉल पार्ट देना चाहते हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं भूमिका केवल प्रेजेंटेशन से शुरू कर देता हूं सर, आपकी आज्ञा से। हाँ, यस। एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप का यदि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लें तो 1990 से ये वर्ड आया। ऑनलाइन तो 1990 से आया। 1995 में अमेजोन बना, उसने एक स्टार्ट किया ऑनलाइन बुक स्टोर। ऑनलाइन बुक स्टोर से बढ़ता बढ़ता आज सोच लीजिए वर्ल्ड का वो टॉप मोस्ट ई टेलर बन गया है, रिटेलर की बजाय ई टेलर। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है। एंटरप्रेन्योर कौन? जो चैलेंज लेना सीखे, सिंपल। who recognize a business opportunity, organize, manages, assumes the risk within the intent of increasing the market value of the business, take charge, self-directed people. अपन लोग है ना, सेल्फ डायरेक्टेड ही तो हैं। शेखर जी डायरेक्ट कर देते हैं, वैसा बढ़ जाते हैं। अग्निहोत्री जी डायरेक्ट कर देते हैं, वैसा चले जाते हैं। और रिस्क टेकर, अपने ज्ञान के वर्धन में रिस्क कोई नहीं है, तो हम लोग ज्ञान के एंटरप्रेन्योर हैं। एवरी ईयर thousands of entrepreneurs start business. Many are successful but remain small. बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ लिमिटेशन उसकी चक्कर में बेचारे छोटे ही रह जाते हैं। वो उतना उन पे इन्वेस्टमेंट करने को नहीं होता। केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, उनका सर्कल, उनकी सोसाइटी, उनकी टीम, टीम का विघटन होना, बनना, बिगड़ना, ये सब कई फैक्टर्स है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ साल में इनमें से कई बिजनेस खत्म हो जाते हैं और जो थोड़े बहुत बचते हैं वो कॉरपोरेट, लार्ज कॉरपोरेट में बन जाते हैं। यदि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एक्सपर्टीज और स्किल दिखाने का मान है। वर्किंग फ्रॉम होम भी हो सकता है, ऊपर मकान नीचे दुकान। प्रॉफिट भी कमाएंगे ही निश्चित जब एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। और सेटिस्फेक्शन होता है एक बिजनेसमैन का अलग, कि टेकिंग ए रिस्क एंड बिकमिंग सक्सेस। हमारा भी रिस्क रहता है, कभी स्पीकर नहीं आए, लेकिन शेखर जी और सुपर्णा जी का करवद्ध में प्रणाम करना चाहता हूं कि वो अलग अलग टॉपिक पे वर्सेटाइल एक्सपर्टीज रखते हैं और हम लोगों को गाइड करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करूं तो रिस्क दैट दे में फेल, डेफिनेटली फेल्यूर का डर रहता है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस बिजनेस पूरी लेनी पड़ती है। कई घंटे काम करना पड़ता है, उसमें ड्यूटी जैसा टाइम टू टाइम काम नहीं रहता। और फाइनेंशियल रिस्क रहते हैं। स्मॉल बिजनेस की यदि मैं बात करूं तो एक लिमिटेड, उसमें इंडिपेंडेंटली, इसकी यदि डेफिनेशन की बात करूं, एन इंडिपेंडेंटली ओन्ड बिजनेस दैट यूजुअली हैज ओनर एज इट्स मैनेजर। अब मैनेजर शब्द बहुत छोटा, वो नौकरी वाला मैनेजर नहीं, लेकिन प्रबंधक
हम यदि कहें तो सब कुछ प्रबंध उसी को करना है। स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन भी बड़ी क्लियर कर दी। एक लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया होना, एम्प्लॉयज फ्यूअर देन 500 पीपल, नॉट डोमिनेट इन इट्स इंडस्ट्री। अरे छोटा भी होगा तो डोमिनेट हो ही नहीं सकता बेचारा। और -25 मिलियन तो यूएसए में है, हमारे यहाँ 2 करोड़ की या 5 करोड़ की ऐसी कोई एमएसएमई ने बना दी है लिमिट कि 1 करोड़ से कम, 20 आदमियों से कम, ऐसा अलग अलग इसकी बना दी है। और एम्प्लॉय 50% ऑफ टोटल वर्क फोर्स। आप सोचिए किसी भी देश में जनरल एम्प्लॉय छोटे बिजनेस के ही 50% वर्क फोर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। और किसी भी राष्ट्र के लिए ये छोटे बिजनेस 50% इनकम लाके देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कमा नहीं रहे हो। नए प्रिंसिपल सोर्स है नए जॉब्स के, क्योंकि आते हैं जाते हैं आदमी, प्रमोट होते रहते हैं, पहले ट्रेनिंग ले लेते हैं और बड़ी कंपनियों में जाते रहते हैं। अकाउंट फॉर 38% ऑफ जॉब इन हाई टेक्नोलॉजी। इसके क्या एडवांटेज है? इजियर टू फॉर्म देन लार्ज बिजनेस, require license for operation, buildings meet zoning requirement, being the boss definitely। कोई भी आदमी अपना बिजनेस शुरू करेगा तो बॉस बनेगा। अपॉर्चुनिटी टू ऑफर सर्विसेज लार्ज कंपनीज कैन नॉट ऑफर। ये स्विगी जोमेटो इसीलिए पनप गए कि पट 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 करके, और छोटे छोटे ब्लैंकेट ये तो बड़ी कंपनियों ने बाद में लिए, लेकिन ये तो एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल्स थे। डिसएडवांटेज की बात करें कि डिसीजन गलत हो गया तो पूरा ही खेल खत्म हो गया, लंबे घंटे हैं। और कभी कभी जब बॉस ऊपर जो भी शीर्ष पे रहता है, whoever इज ऑन द, एब्सोल्युटली ही इज अलोन, क्योंकि उसका विजन, उसकी थिंकिंग, उसका एक एक्शन टेकिंग, ये सब कुछ दूसरों से बहुत हाई रहता है। और जो हाई रहता है वो जिंदगी में अकेला ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके मेंटल लेवल को कोई छू नहीं पाता उसके सर्कल में। अबाउट 4 आउट ऑफ 5 फेल इन देयर फर्स्ट 5 years। क्यों? एक तो आलसी, डोंट वर्क इनफ आवर्स, ओवर प्राइस और अंडर प्राइस प्रोडक्ट, लिटिल और नो एक्सपीरियंस, ट्रेंड्स एंड स्टाइल चेंज। पहले जूट चलता था, जूट से अब प्लास्टिक आया, प्लास्टिक से भी मालूम पड़ रहा है फिर वो कपड़ा और जूट आ गया, तो चेंज हो गए तो कई बंद हो गए। पहले एसटीडी बूथ हर जगह दिख जाते थे, वीडियो गेम के पार्लर हर जगह दिख जाते थे, खत्म हो गए क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, उनकी स्टाइल चेंज हो गई। आज मोबाइल में देखता है, सिनेमा हॉल बंद हो गए। आप दूसरों की बात क्या करें, कई सिनेमा जो इंडिपेंडेंट हॉल्स थे वो बंद होते जा रहे हैं, और छोटी छोटी कैपेसिटी के मल्टी स्क्रीन्स ज्यादा चले आ रहे हैं, तो वो सब बिजनेस के धंधे बंद हो गए। लैक मैनेजरियल स्किल नीडेड, कम है मैनेजरियल स्किल, हम प्रबंध नहीं कर पा रहे। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल प्लानिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी एंथू में शुरू तो कर देता है, जब मालूम पड़ती है कि हम पे वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, तब वो बेचारा फेल्यूर हो जाता है। यदि खुद का बिजनेस बनाना है तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरे खुद के प्रिपेयर बिजनेस प्लान सब कुछ है, लेकिन मैं अपने आदरणीय वक्ताओं के लिए इतना सा फूड ऑफ थॉट देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मैं डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों पर। रिस्पेक्टेड मैडम डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम। एम आई ऑडिबल टू यू मैडम? यस, वेलकम, वेलकम। Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much for giving me another opportunity to say something on this auspicious day. So, basically, small business is a very good term, but to implement it is a very tough. Just because small business not only for an entrepreneurship, not only for the male personalities, but it is also fit for the female counterpart. As we have seen in the rural areas, along with the urban areas too. Urban areas, the women are very busy in their work, and they are basically uh, um, pursuing their daily livelihood sustenance by their own way, because they are getting education. On the basis of their education, they are doing their best. But in case of the rural area,
there is entrepreneurship is very tough just because they are using their family practices and they are incorporating themselves in their daily livelihood sustenance by the availability of the work. So how they start the business and what is the business component, it is beyond their oblivion. So there in that cases they needed the sustainability, and this sustainability will encourage the entrepreneurship. And when we are doing entrepreneurship, they know how to earn, but they have to maintain their life sustainability by everyday life. That means the daily wage life. So we have to develop the some ideological point of view. We should award them, we should train them, that's why they can develop their own personality. So there are several online courses, but it is not very easy for them to incorporate and to avail it. But urban people, they are very good for avail their online businesses. This online business is very important, and they can restore their products and they can sell it through online. They can make the online business, etc., etc. Then the interior design. This is also fit for the urban, not only the women. This is also fit for the both men and women, so they can start their own interior design. So if they have the choice in their ideological point of view, everywhere they can put their ideology. This ideological point of view, they can develop their sensation. Then the yoga instructor is nowadays is a very good business and entrepreneurship. So you can open a yoga school, not necessarily to open an offline yoga school. You can open the online yoga school where you can train the people, you can take the charges, you can take the remuneration through the bank, so they can start their own school and own business purposes. And this is the small business and small business management. Then the jewelry band. There is so many jewelry bands are there all over the world, India and world too. But we can, the state wise, we can recognize it and we can explore the jewelry bands and we can purchase from there. And through online, we can choose it, and through online, we can buy it. And also, we can make some designers. Sometimes the jewelry shops, they can take the designer who is very good ideological point of view. They can also take their the designing purposes. The personal trainers, how to groom you, how to develop your personal identity. So there is a several groomers who will protect you and will give you the ideological part, how to do, how to mix with the people, how to take the interview. So many things, whatever you need it, you can get for through online and offline too. Then the nutritionist, what will be your nutrition, what will be your balanced diet, it is also very important. You can get the balanced diet trainer, they will give you and the ideology, and they can protect you and they can save you for the any kind of ailments. Then the stylist, so which style, which sari will कैसे साड़ी पहनेंगे, उसके साथ कैसा गहना पहनना चाहिए, और कैसे हम स्टाइल करेंगे, हमारा हेयर स्टाइल क्या होगा, द चॉइसेस क्या होगा, साड़ी के साथ कौन सा लिपस्टिक चलेगा. सो दिस आर आल्सो ट्रेनिंग लाइक ब्राइडल, when the bridal designing also there, the facial training is also there. These are the personal woman entrepreneurship, they can develop it. Then personal shape is also there, you can choose your shape, personal shape. Then the makeup starts, so you need the makeup man who can give you the makeup, which makeup will suits you and which type of makeup you will do in the morning, in the afternoon and evening,
and in the night. This is also the choices. Those who have the model, they can use this trainer. The freelancer instructor in every parts you will get it. The freelancing graphic designer is also available in the market. They are starting their own business, and this video editor is there. Podcast producer, it is very important nowadays, this podcast. So wherever you are staying, that means your geographical area, you can start your podcast business. Then the freelance web developer. There are so many web developer is there. They are developing your website, your personal website, and not necessarily the organization individual. So they are developing your all talent, your productions, your which way you are very good and which talent you have, they can produce you. And then there is a online community system, so you can reach to your community goals. So you can sell it. If you have maintained a community, you can sell your products in your community. Travel agency, that is also a entrepreneurship. So you can say it. There is the personal coach, like some coach, especially the sports and culture. You can develop it in the cricket, in table tennis, lawn tennis, whatever the sports is needed. You can take the coaching through online and offline too. Freelancer photographer is also very important. Content creator is also very interesting. Entrepreneurship, which is promoting nowadays. The online store is there. Online store, you can purchase this store, and you can file your database, and you can keep it there, and you have the locking system, the way we are maintaining the locker. So these are very innovative and very good entrepreneurship which is going on. And the wedding planning. So how which type of wedding you will be practicing, will be choice. Because if you have the foreign friend, those foreigners, which type of wedding style they will prefer, so you have to be practice on that. So I have visited in my one of friend, so they have she has the very so many foreign friends, so they prefer the Punjabi Bibah system. So the Bengali couple, but they perform, they maintain the rituals of the like the Punjabi way. So these are also very good ideological. Then transcription. Transcription is also the very good, interesting point for the entrepreneurship. And the teaching, spoken English. Spoken English is there. Tutoring also there's online tuition is there. Then the yeah, there is a you can open your web, and where you can start your tuition. You can give the notes. You can introduce the some kinds of students all over the world. You can get it from there. And then the consultation is there. Sale art is also there. Candle making is there. Organization expert is there. So many things are also involved in this the entrepreneurship system. So that's why. And moreover, we can explore the Ayush is also there. Ayush production and the Ayush awareness is also there. And the way we are making ourselves the Samriddhi, the Ayush Samriddhi, how we are organizing ourselves, and how we are exploring our knowledge and with courage. So that is only the Ayush platform. So Ayush Samriddhi is also another way of the maintenance of not the business. The here business is not only meaning the earning money. The business is also the exploring your talent and your probabilities and your talent orientation with the knowledge. So Ayush, what is exploring the knowledge? Here the knowledge is the capital, and this capital we are exploring for the all over world. Wherever they are, they can get into it, they can see it, they can learn it, and they can enrich themselves through this IELTS platform. So this is the management of this all the system which we are
inculcating and where we are starting and where we are staying, where the field we are exploring ourselves, everyday life and life sustainability. Thank you very much. Thanks to giving me such an opportunity. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मैं इतनी रात को तकलीफ देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों की जो ज्ञान वर्षा होती है वो इतनी प्यारी होती है कि हम लोग भी कई कई बातें नई सीखते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अग्निहोत्री सर। Thank you, Mr. Pawan Sharma ji. अग्निहोत्री सर, हाँ। The great sentence uttered by her is knowledge is the capital. What a wonderful combination of the word आप itself. लेकिन अब न्यूज बनाना शुरू करो ना सर। बहुत थक जाते हैं। The knowledge is the कल एक capital. तारीख है, कल से एक तारीख से केवल लिखना और कुछ नहीं है, एक एक सेंटेंस लिखना है केवल हर स्पीकर के लिए। आप और बोलते बड़ा आयुष प्यारा हो, समृद्धि, आप कलेक्ट भी आयुष बड़ा सम, प्यारा करते हो। आयुष समृद्धि के लिए आप हमेशा लास्ट में 2 वाक्य लिखते हैं हम लोगों को उत्साहवर्धन के लिए, कि आयुष समृद्धि इस भी अपने में एक टूल है जो किसी भी फील्ड में अपना कॉन्स्ट्रक्टिव कार्य कर रही है। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है आपकी वाणी से। बहुत बहुत आभार। मैं अब डॉक्टर शैकत बसु जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, और रेखा जी जुड़िएगा, आपकी ओपिनियन लास्ट में जरूर लेंगे कि आपको कैसी लगी है वेबिनार। डॉक्टर शैकत कुमार बसु जी, वेल। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू अग्निहोत्री जी। अरे आई दर्शन दे थिंक दिया करो आपकी प्यारी प्यारी चंद्रमुखी सूरत के गुरु, आनंद आ जाता है। हाँ, कल 1 नवंबर में नया रूप में आपके सामने आ जाएंगे। आज आज थोड़ा माफ कर दीजिएगा। जय तो हो, जय हो, जय हो थैंक आपके यू, थैंक लिए। यू, थैंक यू। अब अब मेरे को आपकी डेट्स भी चाहिए अगले महीने की। भेज दिया, भेज दिया। आप आपके वो ईमेल में वो वो जो आपको दोनों नया ईमेल रूप है अंडर ना, प्रोसेस है। नया रूप इज अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात है, तो सब कुछ मिला के मोटी मोटी बात आपके सामने आ जाएंगे। कोई बात नहीं। और शर्मा जी, आपको मैंने वो ईमेल भेज दिया, लाइक इफ यू चेक योर मैं ईमेल, वो जो देखता हूँ, आपके आईरेस ईमेल है ना, उसके अंदर मैंने टॉपिक्स वगैरह डेट सब कुछ सेट करके भेज दिया। नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल जस्ट कंक्लूड बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज ऑलमोस्ट 11:30। ये इसके सक्सेस के कुछ स्टेप्स के बारे में जब हम लोग हाईलाइट करेंगे, मैडम हैज वेरी नाइसली इलस्ट्रेटेड ऑन वेरियस एरियाज, वेरियस जॉब्स एंड प्रोफेशंस दैट आर नाउ कमिंग अंडर दी स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। और शर्मा जी तो इसके मुखबंद में इतना सुंदर उसका एक इंट्रोडक्शन कर दिया कि मेरे लिए और कहने के लिए कुछ रहा नहीं। बट फिर भी जस्ट 5 little points that I feel that it is very important for those who are venturing into this. It is because that it is always important to start young. Like we always say that it is never late. Whenever you start, if you can start, there is always there is an opportunity to get a success. But particularly for business ventures, it is important that you start early. The earlier you start, it is not that if you start early, you are going to and you will be making money and stuff and things like that. Where I suggest is why it is important to start young is because have the stressful struggling part of establishing a business when you are young, because this is an age when you are young, you are enthusiastic, you could work hard, you could go and run around different places. These becomes challenging as your age increases and more of family responsibility etc gets onto your shoulder. So it is no longer that easy for you to run around from one place to another. Also, if you start young, if one particular business has not been very suitable, it gives you a lot of opportunity and time to switch to a second one. So this is what is very important, to start young in business, particularly these ones. And third is, no matter whatever kind of business that you are doing, even it is small enterprise, the biggest asset of your business is your experience. The things that you learn, what you should not do, is the most important part for making a business success in the long run.
It is very important that one has to go through this. In many traditional Indian families where business is a part of their traditional profession, like the elders in the house are still in business and the young ones are introduced, they are very fortunate because they are getting an experience while the elders are still in the business, and you get groomed, you get trained, and there is high chance that you will become successful because you don't have to cross and those hoops and jumps, because there are people who has already done it for you and they are providing you the way. So you start and you gain experience, you build your network, you build your collective experience, you become successful. But for those who are doing it for the first time, there is no family history of doing business and stuff and things like that. If you start young, you will learn a lot. Just important is knowing to how to deal with people, how to deal with government people, when to talk, when not to talk, where to go for grants, where not to go for grants, what kind of things bank wants to see from you, and what kind of things banks do not want to see from you, which reduces your chances of getting loans, are very important. Then what are the most important parts you need to show to the bank to get a loan and stuff and things like that. So all these nitty-gritties of a business is very, very important. And the faster you start in getting into this, the chances are that your successful will be very, very high. Number two is not to become too greedy. Sometimes when you start this kind of a business, and if you are lucky enough, it hits the jackpot, and the initial return is very huge. In most cases in business, if you start, there is time, there is occurrence that you will not making a big return. It takes time before you can start getting your good ventures back over the time. But sometimes if you are lucky enough, you may get a very good venture back into you at the very initial part of the program. Don't become cocky, don't become proud. Learn from this experience and save that money. One I see, like, I am a Bengali, and I have seen a lot of my friends who are Sindhi community, Punjabi community, Marwadi communities, which are traditional, Gujarati communities, which are traditional business community. And one of the things that I have learned, that why these communities are so successful, and Bengali communities which are not traditionally business oriented are not successful, is this: I see a Punjabi young guy get a huge return from the business, but he knows how to save that money. He will invest a part of this in the bank, keep that money for watch time and things like that, and invest the other in expanding the business. Where I've seen in untrained families, a Bengali guy, when he gets a huge amount of money return accidentally, it's a great return. He will go for on a shopping spree, go out with the girlfriend, spend few days in Hawaii, maybe go to US, spend that money, and then he will be crying that my business has crashed. One has to remember, business is not like doing a job. Like, in case of a job, there is a regular salary that is coming up. In case of a business, in your good days, when you make good profits, you need to save that money for your worst days. People who do not learn this and waste the money, when the Lakshmi is coming, you have to lock the Lakshmi. If you let the Lakshmi do uchal kud, you are going to cry. So have your Lakshmi locked when you are making profit. This is very important for young people to understand and appreciate, that don't go on shopping spree, don't waste your money when you are making the initial success and stuff. Third, not to get frustrated. It is very, very easy for any small enterprises when you're doing it on your own. In the earlier days, you will be getting through a lot of hoops, lot of lack of success, lot of losses. But if you have to be successful, you have to go through it. And remember that everyone who has gone through this path has never become successful unless they have lost. Whether it is Tata's, Birla's, Ambani's, Ahuja's, Adani's, everyone. Adani is even making huge losses now. But is he stopping? He's having one loss here, he's investing in another country. This is something to learn, that never stop. For a business person, you have to keep on investing, you have to keep your money rolling, and you have to push yourself up and up against all odds. This is one of the biggest strength of an individual businessman, how successful you are, if you can know how to handle your stress and how to handle your frustration. This is half the battle won. This is very, very challenging. And business is also not like a job. Sometimes you are sitting in your shop, there is no sale on one day, is a whole day wasted. I think it is important to utilize that time. When in the initial days, when you're sitting in your shop and you're waiting for your customers and stuff, not many people are coming.
Don't spend the time with frustration. You have a cell phone, you have the contact number, keep on contacting people. Try and build up your rapport, try and build up your network. This will help you a lot. It is important to know the loopholes of the business. Where are the challenges? Where are the profit making areas? Which are the profit making months? Which are the loss making months? Once you go through the business, you will get to know these loopholes and stuff and things like that. And don't just hire a bunch of people and think that because you have hired them, they will do your job. They will definitely do the part that you have hired for. But remember, it is your business. You have to do the hard work. Sitting in the gaddi is not doing the business. Sitting in the gaddi is your management. But you have to go and meet the retailers. You have to go and meet the distributors. You have to go and check with your customers. You have to make sure that the things that you are being delivered from whatever service it is, that it is up to the mark. Customer satisfaction is important, because this word of mouth or this satisfaction that people are getting will help you to get more business. So pay time on that. Do not depend on the people that you are hiring to get your duties done. With this, I extend my sincere gratitude for Ayush Samriddhi to get me this opportunity, and I extend my best wishes for everyone who is looking for going into new ventures, starting new business. Whether it is small business ventures, it is very important. Your small initiative now is a big initiative, and we remember, a businessman is more important than one who is doing a salary, no matter how much money he is earning, because you are not only earning your own bread, you are earning bread for 10 different families. To me, you are doing a much greater service to the nation than a person who gets a regular salary, because you are not only feeding your mouth, you are becoming the doorway to feed other people's mouth too. You are becoming the doorway to cater to the other people's need too. So in this way, they are more respectful, or they earn my respect in that particular sense, that how many people you are employing, how many more you are connecting in the society, and how many more people you are supporting. While an individual who is doing a service, it's a selfish job. You go 10 o'clock, you come back by 5 o'clock, you get your salary, it is done. There is nothing more you can add to it. Here, you can add a lot of your creativity. Use your energy. Days which are going lean, try and utilize the time to connect and build your networks. Try and reach out to the customers. The more you are able to control your mind from not getting frustrated and building your network, the more successful you will become in your business. Thank you very much. Thank you, Sharma ji. Thank you, Agnihotri ji. We had a marathon webinar series today, and we have you. successfully थैंक यू completed. थैंक I यू am very happy about नहीं that. ये it is possible with both of you speakers only because you keep the time in mind. Really great. Otherwise, we couldn't conduct 4 webinars a day. Thank you for Thank you, Sharma ji. consecutive 3 webinars Sharma. speech. अग्निहोत्री Thank you. सर, बहुत, इट्स रेखा रियली अ सिन्हा जी वंडरफुल, हमारे साथ हैं। रेखा जी से भी इट्स सर वंडरफुल ओपिनियन डे। ले लीजिएगा। हाँ, डॉक्टर रेखा सिन्हा जी हमारे साथ शुरू से हैं। हम सकत कुमार बसु साहब का आभार करते हैं के साथ साथ डॉक्टर रेखा सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने कुछ भी विचार आज की वेबिनार से लेके और अभी तक आपको कैसा लगा, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपके क्या थॉट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं डॉक्टर रेखा सिन्हा। आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट करके अपनी अपनी कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो स्वागत है। Though it's a very late, it's a 11:45 almost. ज्वाइन किया है लेकिन वो नहीं रिस्पॉन्ड। और के साथ में कोई प्रतिभा थी क्या थी? कंक्लूड करें जी, हम आज अपनी रेखा जी। 4 वेबिनार्स के लिए सभी अतिथि वक्ताओं का बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनसे प्राप्त हुए सभी गाइडलाइन, सभी उनके एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, और स्पेशली हम चले तो बहुत अपने तरीके से थे, लेकिन जो साइबर क्राइम की बात आई वो सबसे अलार्मिंग रही, क्योंकि उससे हर कोई जुड़ा। हमारा सारा का सारा जो प्रोसेस, पूरी बिजनेस इसी पे चल रही है, इंटरनेट से चल रही है, और हमारे जितने भी गैजेट्स हैं उन पे चल रही है, मोबाइल, लैपटॉप सबसे। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जो सीक्रेसी है या हम अपने जो भी कहना चाहते हैं वो किसी
हैंग ना होने पाए, किसी चीटिंग में ना चला जाए, और हम खुद भी ऐसे किसी उससे शिकार ना हो। साथ साथ छोटे छोटे काम भी बड़े काम होते हैं। ये आज बतलाया गया हमारे अतिथि वक्ताओं के द्वारा कि एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो 5 परिवार को पालता है, जबकि एक सर्विसमैन केवल अपने एक परिवार को पालता है। ये बात अगर उस ढंग से देखी जाए तो निश्चित रूप से बिजनेस चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो करने वाला अधिक प्लानर है, अच्छा वो कर्म कर्म योग करता है, और निश्चित रूप से उसके द्वारा बहुत से लोग लाभान्वित होते हैं। कैपिटल भी वो अपनी लगाता है, परिश्रम भी अपना करता है, समय भी अपना देता है, और तब जाके उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सभी के परिवारों को प्राप्त होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके द्वारा हम लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए। आयुष समृद्धि आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू नमस्कार। अग्निहोत्री जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक शर्मा यू। जी अभी है तो? हाँ है। हम्म। पवन जी, है। पवन जी, वो हाँ हाँ। कंप्यूटर का ट्रिप्स वाला जो वीडियो लिंक है ना, वो मुझे मिला नहीं आपके वेबसाइट से, मुझे थोड़ा भेज दीजिएगा, हमको थोड़ा भेज दीजिएगा। कौन वो कौन सा कंप्यूटर वाला, ट्रिक्स, कौन सा वाला ये? कंप्यूटर साइबर क्राइम कंप्यूटर ट्रिक्स के जो है ना, कंप्यूटर के टिप्स जो अभी थे, भेजता हूँ, अभी भेज। हाँ उसे उसे थोड़ा भेज दीजिएगा। हाँ, अभी बाकी सब भेजता कुछ हूँ, अभी मुझे भेज। मिल गया है, कल आपसे भी जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैं हाँ, आपको वो भेज नहीं दिया है, नहीं, मैं देख तो लेना। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी यदि कलेक्ट करें तो अपने वो जो ग्रुप है उसमें जुड़ते रहिएगा। और ठीक एड्स है, वाला ठीक है, मैंने डिजाइन बना भेज ही दिया ठीक है, है ना? एड्स वाला डिजाइन मैंने ठीक ठीक ठीक, बना के भेज ही दिया। ठीक है, थैंक ठीक यू, है, ओके, थैंक यू। थैंक गुड यू, गुड नाइट टू नाइट, ऑल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।